A possible tornado swept through the Henderson Beach area on Saturday, causing significant damage to multiple businesses and vehicles. The OCSO reported that 77 locations are currently without power, and Florida Power and Light, FPL, is on the scene working to restore electricity. Despite the damage, there have been no reports of injuries. Destin units are actively managing traffic signals to ensure safety in the affected areas. Destin Fire Rescue stated that there is a lot of standing water and debris on the roads and urged residents to be cautious as emergency crews work to restore power and clear the area. They also noted that several traffic lights have been affected and urged drivers to use caution. An atmospheric river event is bringing the heaviest rainfall Florida has seen since winter, with widespread downpours expected to continue over the next several days. Tornado warnings wailed across parts of the Florida Panhandle on Saturday, including one tornado near Uchiana that was confirmed by radar. Officials in Destin, Florida, reported damage from a possible tornado as severe weather moved through Saturday morning. Multiple businesses and vehicles were damaged, said officials with the Okaloosa County Sheriff's Office, adding there were no reports of injuries so far, but dozens of locations were without power. In addition to severe weather, forecast models show the potential for widespread rainfall, with totals ranging from around an inch in the least impacted areas to possibly upwards of a foot in communities that see repeated rounds of thunderstorms. Flood watches also cover a portion of the Florida Panhandle into southern Georgia and a sliver of southeastern Alabama. Storm spotters in Ocean City, Florida reported multiple flooded roads after heavy rains pushed through. While atmospheric rivers are often associated with winter storms on the West Coast, the phenomenon can occur elsewhere in the U.S. and around the world wherever deep tropical moisture is involved. The Forecast Center says the system responsible for this surge of precipitation is a low-pressure system that has become cut off from the main jet stream, making it slow-moving and capable of producing prolonged rain. When the low pressure is vertically stacked from the floor all the way to the top of the troposphere, it doesn't really move that fast because nothing's pushing around, said weather meteorologist Bob Van Dillen. Me and Zach literally just lived a tornado. That's what we have. And that's that area of low is going to jack that cold front down and siphon a lot of moisture off the Gulf and the Caribbean too. Florida won't be the only state impacted, as a broad swath of heavy precipitation is expected to stretch from Louisiana to the Carolinas, which will last into the first half of the upcoming work week. It's picking up in intensity, and it's going to be even worse later on as we go through the day into Sunday and Monday, Van Dillen stated. But for the Sunshine State, the rain could help suppress wildfire activity during what is considered to be the peak of the fire season. Most rainfall deficits in Florida currently range from 2 to 6 inches, with 96% of the state considered to be unusually dry and 25% experiencing severe drought conditions, according to the latest drought monitor. The areas expected to receive the most rainfall are along the Interstate 10 corridor, from Pensacola through Tallahassee and Jacksonville. In contrast, the least amount of rain is expected well south of the I-4 corridor in South Florida. Unfortunately, that's where most of the fires have been, with Miami-Dade Fire Rescue recently responding to a large grass fire burning between Florida City and the Florida Keys. Meanwhile, a tornado watch has been issued for the Wiregrass. This watch is in effect for Houston, Dale, Henry, Coffee, Geneva, and Early counties until 5 p.m. Central Time. Severe thunderstorms capable of producing an isolated tornado or two are possible through this evening. The watch comes as multiple strong to severe storms made their way on shore this morning in the Florida Panhandle. A level 2, slight, risk of severe weather remains in effect today.
Other hazards we are watching for include damaging wind gusts up to 60 miles per hour, quarter-sized hail, and flash flooding. An aerial flood watch remains in effect until Monday afternoon. This is our deck. We're very lucky. On Sunday at 12:45 a.m. a flood watch was released by the National Weather Service valid from 7 a.m. until Monday 7 p.m. for Marion, Lamar, Fayette, Winston, Walker, Pickens, Tuscaloosa, Jefferson, Shelby, St. Clair, Talladega. नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल एमपी वेदर फोरकास्ट पर। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आने वाले आगामी 4 दिनों में मध्य प्रदेश के हिस्सों पर किस प्रकार का मौसम रहने की संभावना बनी हुई है। लगातार देखिए दोस्तों, एटमॉस्फेयर में नमी वाली हवाओं के कारण 12 मई के दिन मध्य प्रदेश के अधिकांश भागों पर घने बादलों की आवाजाही के बीच तेज बारिश होने की संभावना है। सबसे पहले अगर हम मध्य प्रदेश के पश्चिमी जिलों के मौसम के बारे में बात करें तो नीमच, मंदसौर, रतलाम, धार, उज्जैन, अलीराजपुर, बाड़वानी, खरगोन, देवास के भागों पर हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की से लेकर मध्यम बारिश और कुछ स्थानों पर तेज बारिश हो सकती है। और जो मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग हैं और पूर्वी भाग हैं, इन क्षेत्रों पर मौसम साफ रहेगा। दक्षिणी मध्य प्रदेश के बैतूल, छिंदवाड़ा, होशंगाबाद, जबलपुर, उमरिया के आसपास के भागों पर हल्की बारिश हो सकती है। तापमान के बारे में बात करते हैं कि 12 मई के दिन मध्य प्रदेश के भागों पर कितना तापमान रहेगा। दिन और रात के अधिकतम तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट हो सकती है। 13 मई के मौसम के बारे में बात करते हैं। लगातार देखिए दोस्तों, अरब सागर की तरफ से सक्रिय नमी वाली हवाएं मध्य प्रदेश के तमाम हिस्सों को प्रभावित करने में अहम भूमिका निभा रही हैं। जो मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग हैं, गुना, ग्वालियर, शिवपुरी, भिंड, मुरैना, दतिया, इन भागों पर भी हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की बूंदाबांदी हो सकती है और कुछ स्थानों पर तेज बारिश भी होने की संभावना है। और जो मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग है दोस्तों, इन भागों पर भी अनुमान है कि हल्के बारिश वाले बादल टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, सिद्धि, सिंगरौली, अनूपपुर, डिंडोरी, मांडला, बालाघाट, इन भागों पर हल्की से लेकर मध्यम बारिश हो सकती है। बाकी जो मध्य प्रदेश के पश्चिमी और दक्षिणी भाग हैं, इन भागों पर लगातार सक्रिय नमी वाली हवाओं के कारण दोस्तों मध्यम से तेज बारिश होने के आसार हैं। तापमान के बारे में बात करते हैं कि 13 मई के दिन मध्य प्रदेश के भागों पर कितना तापमान रहेगा। दिन और रात के अधिकतम तापमान में 3 डिग्री सेल्सियस तक का इजाफा हो सकता है। 14 मई के मौसम के बारे में बात करते हैं। 14 मई के दिन दोस्तों बारिश की संभावनाएं थोड़ी सी मध्य प्रदेश के हिस्सों से कम हो जाएंगी। चाहे मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग हो या फिर पश्चिमी पूर्वी भाग हो, तमाम भागों पर दोस्तों अरब सागर की तरफ से आने वाली उत्तर पश्चिमी शुष्क हवाओं के कारण मौसम साफ रहेगा। और बंगाल की खाड़ी दोस्तों आने वाले दिनों में अब धीरे धीरे सक्रिय हो जाएगी, जिसके चलते दोस्तों मध्य प्रदेश के कई भागों पर गरज चमक के साथ तेज बारिश हो सकती है। बाकी 14 मई के दिन तो उज्जैन, थार, खंडवा, खरगोन के भागों पर हल्की बूंदाबांदी हो सकती है और कुछ हल्की बारिश की गतिविधियां पन्ना, सतना, रीवा के आसपास के भागों पर भी 14 मई के दिन हल्की बारिश होने की संभावना है। लेकिन दोस्तों 14 मई के दिन मध्य प्रदेश के ज़्यादातर हिस्सों पर लगभग मौसम शुष्क देखा जा सकता है। तापमान के बारे में बात करते हैं कि 14 मई के दिन मध्य प्रदेश के भागों पर कितना तापमान रहेगा। दिन के अधिकतम तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस तक का इजाफा और रात के तापमान में 4 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट देखने को मिलेगी। 15 मई के मौसम के बारे में बात करते हैं। 15 मई के दिन देखिए मध्य प्रदेश के मौसम में बहुत ही तेज़ी से बदलाव देखे जा रहे हैं। यानी अभी तक जो बारिश की संभावनाएं मध्य प्रदेश के ज़्यादातर भागों पर देखी जा रही थी, तो 15 मई के दिन मध्य प्रदेश के भागों पर बारिश की संभावनाओं में विराम चिन्ह लग चुका है। फिर भी लगातार दक्षिण भारत की तरफ से सक्रिय बारिश वाले बादल बैतूल से लेकर छिंदवाड़ा, खरगोन, देवास के आसपास के भागों पर हल्की से लेकर मध्यम बारिश हो सकती है। बाकी गुना, ग्वालियर, शिवपुरी, भिंड, मुरैना, दतिया, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, सिद्धि, सिंगरौली, अनूपपुर, डिंडोरी, मांडला, बालाघाट, इन भागों पर लगातार कुछ पूर्वी हवाएं और कुछ उत्तर पश्चिमी शुष्क हवाओं के कारण मौसम साफ देखा जा सकता है और पूरी तरीके से दोस्तों शुष्क मौसम देखने को मिलेगा। तापमान के बारे में बात करते हैं कि 15 मई के दिन मध्य प्रदेश के भागों पर कितना तापमान रहेगा। दिन और रात के अधिकतम तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस तक का इजाफा हो सकता है। आप सभी से मैं निवेदन करता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।